Okay, Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the fifth lecture of data mining. So today we are starting the third week of this semester, uh, and so from now on, there's going to be more activity in terms of quizzes as well as assignments. So so we do have a quiz towards the end of this lecture at 6:05. The quiz is around 10 minutes long, and you will have about five questions, and most of those questions are short questions. So, most likely, you should be able to answer them very quickly. So, during the quiz, you are required to be online on Zoom. Okay. And the content for most of my quizzes are based on what we have covered in class and the associated readings from the textbook. So, and essentially what we cover in class is the focus, especially when you are reading stuff from the book. You can read other sections that are not explicitly covered in the class, but those are for your extra reading that might help you in further understanding, but the focus should be on what we had emphasized in class. Okay. So this is especially true for quizzes. Of course, in assignments and other stuff, you might need to require, you are required to kind of do more reading. So, are there any questions before we get started? Okay, so in the last lecture, we had started talking about data preprocessing. And as we discussed, there are a number of, you can say, steps that you can perform in data preprocessing. All of these steps are not mandatory, nor are they in some specific order. The discussion of these steps are just to help you understand the need uh, for these steps and when they should be applied. So for any given particular data mining task, you should have uh, you should decide based on this understanding which step to apply and which not to. So can you see my slides? Okay. So we stopped at discussing data integration. Data integration, and the idea behind data integration is that whenever you combine data from multiple sources, you might run into some problems. So one of the problems is inconsistency for information that you have taken from different sources. And the other problem is redundancy. You might have redundancy. So same information might be coming from two sources. So how do you detect such kind of redundancies? So we started talking about that last time. So redundancies can occur in, you can say, first of all, there are in terms of inconsistencies or matching, you also have to determine what is known as schema. You have to do schema matching. So as I mentioned last time, so maybe in one database, name is titled as name, and in another database, you basically might have customer name, for example, as the title of the attribute. So you need to decide whether both of them talk about the same thing or not. So usually these kind of resolutions are done through the metadata. You look at the metadata and decide whether they are the same thing or not. So this is the problem of schema integration or schema matching. And then
you have the problem of matching values. So you can, there's the issue of kind of matching, you can say, entire columns, for example, which are some feature values or attribute values, and then matching entire rows or matching entire tuples. So for entire rows, I talked about similarity. You have to define a similarity function, and based on the threshold that you put on the similarity function, you can decide whether two tuples are the same or not. For attributes, you can do the same as well, but usually we uh, use statistical measures that kind of relate those two attributes, the values of those two attributes. And we had already talked about this before as well when we talked about data understanding. So there are a number of measures that you can apply based on the types of the attributes. So you can use AUC, for example, if one attribute is continuous, the other is discrete. So you can use that. You can use information gain, for example, for this as well. Information gain can be used for discrete as well. So, and of course, you can use chi-square. Chi-square can also be used for discrete and discrete. So last time I wanted to show you an example for chi-square, the computation for chi-square. So if you have two categorical attributes, gender and grade. So gender has two distinct values, M and F, and grade has, let's say, three distinct values, A, B, and C. So you, for such uh, attributes and a data set for those attributes, you can create a contingency table or crosstab. So crosstab basically is a 2D structure. Rows has values for one attribute, columns has values for the other attribute, and the cells for these rows and columns contain the number of observations that have those two values. So, so for example, male with a grade A, there are 20 males that have a grade of A. There are 30 males that have a grade of B, and there are 30 males that have a grade of C. And if you sum the entire row, that gives you the total number of males, which is 80. Similarly, for females, if you sum all the females again, you have 80 there. And if you sum both of these, you get 160. So the total number of students is 160. Similarly, you can sum the columns as well. For example, if you sum the column of A, that tells you the total number of students who got an A, which is 50. And then you have 60 that got a B, and then 50 again for A. So I'm using this as an example. Of course, from this data, you do see that there is not a very strong relationship between gender and grade. But let's see what the chi-square measure gives and how is it computed. Okay. So one thing that the first thing that you have to do is to estimate the value of each cell, assuming that these two attributes are independent. And to do that, we take the total, kind of you do a so for each set of uh, let's say value of for one gender, you duplicate all the values for the other so that there is no relationship between that. And based on that, you estimate the number of observations. So to do that mathematically, use, for example, let's talk about male and A grade. The observed value is 20, right? So to find the estimated value, assuming grade and gender are not related, you basically have to, uh, so we have the total number of males is what, 80? 80. So you multiply that with the total number of people who got the grade A, which is 50, and you divide this by the total number of observation, 160. So you get this answer.
So 25 is the number of males who should have gotten an A if both of these attributes were independent. Okay? So similarly, you have to do this computation for every cell. So let's say for male and grade B. So, so how many males do we have? 80. How many people getting grade B? 60 divided by 160. What happened? So we get a value of 30. So actually now the observed as well as the uh, value based on independence relationship is the same. Okay? So similarly, you compute it for every cell. For the third cell, so you can put those values there. One second. So the observed value, the value that we got from independence relationship was 25. So this is also again 30. And this here, this one would be what, 30, 80, and then we have, this would also be 25, right? Yes, sir. Because 80 males and C is 50, total C is 50. So this would be same as the above. Okay. 25. So this is 30. So this is 25. Okay. So now we have both values observed as well as those that are computed. So the chi-square is then basically the squared error between the observed and the independent value, of course normalized uh, with the number of independent values. So let's do that. So we have to do it cell by cell. So the first cell, of course, is 20 minus 25 squared divided by 25. Independent value is 25. So plus second cell is 30 minus 30. Obviously, this would be 0, so I don't need to do rest of it. So plus third cell is what? 20 and 25. 20 minus 25 whole square divided by 25, right? Okay. So Sir, plus, isn't it 30 and I'm 25? going row wise. So third cell, fourth Uh, cell would be 30 minus 25 whole square divided by 25 plus this would be 0. 30 minus 30 plus 30 minus 25 whole square divided by क्या था ये 25 था. ठीक है. ये कंप्यूट करके नहीं दिया इसने. अच्छा, इस पे ऑटोमेटिक कंप्यूट नहीं हुआ. But as you can see, usually it was going to be a small value, right? 30 minus 25 most जगह पे आ रहा है, वो square हो रहा है, फिर divide हो रहा है. ठीक है ना? So it's going to be a small value. So generally, the chi-square value ranges between 0 and of course infinity. It can be large. There's no upper bound in general. ठीक है? A value that is close to 0, it means that the attributes are
independent, and a higher value means that they are dependent. And you can see why higher values mean dependence. When there's a difference between a greater difference between the observed and the value computed based on independence, then obviously the chi-square stat would increase. Okay? So this Sir, kind of quantifies, you can say, the degree of dependence between the two attributes. And if the सर degree, इसमें सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर इसमें डिवाइड हम कंप्यूटेड वैल्यू से कर रहे हैं. computed value se kar rahe hain. थैंक यू. Although that doesn't make a big difference if you talk about just a comparative value. ठीक है ना? Comparative value से बात आप कर रहे हैं तो it doesn't make a big difference. But obviously if you want to Sir, be statistically pure, so it would make a difference. sir, I have a question. Sir, यहाँ पे the attributes we are comparing आपकी आवाज वो रात कम आ रही है. सर अभी आ रही है? जी थोड़ा सा मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ. जी बोले. अच्छा सर, आई एम आस्किंग कि यहाँ पे जो दो attributes हम compare कर रहे हैं, are those like a grade and the number of students who are acquiring that specific grade? हम्म. नहीं नहीं. ग्रेड In the एंड जेंडर. exactly. एट्रीब्यूट दूसरा तो जेंडर था. फिर हमने हर एक ठीक है. सेल में उन दो एट्रीब्यूट्स के वो पर्टिकुलर वैल्यूज के काउंट्स लिखे हुए हैं, जो ऑब्जर्व्ड काउंट्स हैं, जो हमारे डेटाबेस में थे. और जो पैरेंथेसिस में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन ए रिलेशनशिप और इंडिपेंडेंस. ठीक है. Alright sir. Okay. Of course, when you study this chi-square statistics in a statistics course, they will also tell you stuff about degree of freedoms and confidence intervals, and at which percentage or which value you can reject the hypothesis that these two are independent or not. So you can do that here as well, but usually, as I said, we are doing comparative analysis. So for comparative analysis, it doesn't make we typically don't spend too much time and look at the value and compare with others and make a judgment. This is much higher, this is much lower, and so on. So basically, a higher value means that they are more related. A value that is zero obviously means that they are not related. So as I mentioned before, the range is from zero onwards. There is no negative value. So zero means that they are independent. So for example, when would it be zero? When the observed values, when the observed value and the computed value are exactly the same. The square, the difference would be zero. You can square them, you can divide whatever, you'll get an answer of zero. So that means that they're independent. But uh, as the independence erodes, the values becomes larger. Okay. So, okay, so this was chi-square, and here we are studying, you can study the relationship between attributes using chi-square, as well as in this particular case, we were trying to identify if two attributes are redundant or not. Okay. So, so that's another use of the chi-square stat. So, so you can use AUC if one attribute is continuous, the other is discrete. You can use, for example, Pearson correlation if both attributes are continuous. So Pearson correlation can be used. For continuous attributes or numeric attributes, and so on. So you have multiple ways of quantifying stuff. Okay, so let's move on. So in these chapters, essentially we are not spending too much time because obviously there are tons of things that you can do, and most of those things are relatively simple in the sense that you apply a stat and then make a judgment on it, because we are doing data pre-processing. We're not doing any uh,
any, you can say, so whatever we get is not our eventual result of the data mining. Okay, so now let's talk about data reduction. So as the name suggests, so data reduction is trying to reduce the size of the data. ठीक है? ठीक है? So reducing the size of the data. So the obvious question is, why would we want to do that? ठीक है? So the answer typically is that because usually when the data set is very large, it takes a lot of time for processing, and to limit our processing time, we would like to reduce the data. Okay? Decrease the size of the data. And when I say size, typically there are two things that are involved. So size implies number of attributes or features, and then the other is number of, you can say, observations, okay, slash instances. So one is number of columns, the other is number of rows. Both of these constitute size. Okay? And if you talk about number of attributes, those are also called features or dimensions. So there are multiple ways of calling those. So reducing the number of attributes is also sometimes called dimensionality reduction. Okay? So reducing number of features. Okay? So this is dimensionality reduction. And reducing the number of rows or number of observations is basically called numerosity. Numerosity. Spelling में सही हुआ. Reduction. So basically reducing number of rows. ठीक है? So in each of these categories of reduction, there are a number of techniques that you can do. So we are going to basically give you some idea here and maybe discuss one or two ideas in more detail. But obviously we can't go into the detail of the techniques of each of those ideas. So let's start with dimensionality reduction. So dimensionality reduction is actually further divided. So dimensionality reduction can be either selection, or which sometimes is also called, which as you can say, feature selection or feature extraction. So in दोनों में फर्क क्या है? So dimensionality reduction is simply selecting, or sorry, feature selection is simply selecting from the set of possible features, while feature extraction is maybe creating new features and selecting a small number of those new features. So in other words, you're extracting or building new features, and from those new features selecting a few. So just to give an example, let's say if you have a data set with attributes A, B, and C. So there are three features here, three dimensions. So feature selection could mean you can take any combination of the power set of these three features. So for example, you can select A only, right? You can select B only. You can select C only, which is one feature being selected.
or you can select A and B, or you can select A and C, or you can select B and C. And of course, the last one is you select all, which is means there's no real selection. And that actually the fourth also is that you don't select anything, which is null. So जितने ये हुए हैं, this is actually the power set of these three. ठीक है, of course दो तो इसमें kind of कह लें कि doesn't make any sense, which is the whole set, whole combination, and one is the null. ठीक है ना? So you have these options. इन options में से आपने कोई हाँ? select, ठीक है? क्या? जी जी. You gonna what? Okay. No. It's me. I was just gonna put wet nail polish on Stop. the very You made- end. आप Anusha म्यूट कर is दें, calling अपने you. आपका वॉल्यूम ऑन है, म्यूट करेगा. ठीक है. All right. So, so feature selection, as you can see, you have a lot of options. So ये मैंने सिर्फ 3 features use किए थे. हमारे पास options क्या बन रही थी? हमारे पास options बन रही थी. You had so basically A, B, C, which is 3. Then you have AB, we have AC, we have BC, which is 6, and then you have 2 more, which is of course not too important, but in general you have total 8. So 8 ये फिर क्या बन रहा है? So you either select something or you don't select something and put it in the power set, which is 2 raised to power of 3. ठीक है? So let's say if you have m dimensions, so आपके पास कितने possibilities हैं? 2 raised to power of m. And let's say m आपके पास 20 है, or it could be even 100, even 1000. So number of dimensions can be quite large. So 2 to power of, let's say 20 भी करें, so this is going to be a huge number. So from this huge number, you want to pick the best. So it's in general not a easy search. ठीक है? ऊपर किसने चले गया? एक सेकंड. What happened to the other content? Delete हो गया? Okay. अच्छा ठीक है. All right. So it's 1 million something. ये पता नहीं कहाँ से आ गया 0 INF. Okay. All right. All right. So you have a huge number from which you have to select. So usually we use some simple heuristics, some greedy heuristics for feature selection. Okay? So usually these heuristics are based on some measure of attribute importance. Okay? So and of course, you can do this iteratively. So iterative में आप for example, you can either do selection starting from the null feature set and then select the best and then the next best until you stop, or you can go the reverse way, which is elimination. You continue, start with all the attributes and then remove the first attribute that is the least important or significant according to your measure, and then the next and the next. So again, just for a simple example, A, B, C, आपके पास 3 attributes हैं and you have some measure. Let's say वो measure मैं कहता हूँ F of A and F of B and F of C, where F is a measure that quantifies the importance of that attribute. So based on this, and let's say, okay, based on this, you start, let's say you're starting from the null set, then
you basically select the attribute that has the highest F value. So for example, the C has the highest importance value, so you select C. And let's say then once you have selected C and you still want to grow your feature set, you can then select the next best. Let's say next best was A, and then you stop there. Of course, if you pick the third one, it will always be B, and that is a complete set again. ठीक है ना? तो इस तरह आप एक सिलेक्शन कर सकते हैं. So this is basically called greedy feature, you can say selection. If you go the other way around by starting with ABC and eliminating, that would be greedy feature elimination. Okay? Both of them are kind of the same. It's a heuristic, greedy heuristic. But for this to work, you need that function f. ठीक है? अब वो f क्या होगा? Sir, what should we do when we have like lot of attributes? अच्छा, आपकी ये मुझे फिर पूरी आवाज नहीं आई, वॉल्यूम कम था आपका. Sir, I'm asking like what should we do when we have lot of attributes and we are like testing by permutations to select the best features out of them. अच्छा, आपकी आवाज में सही नहीं आ रही है, आप जरा फिर से बोलें. What do we do? सर बेसिकली यही सवाल था मेरा कि लाइक जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो अगर एट्रीब्यूट्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाएं लाइक फीचर्स ज़्यादा हैं तो हाउ डू वी डील देम, लाइक किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं बेस्ट फीचर्स, क्योंकि परम्यूटेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे. जी जी, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, परम्यूटेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. तो ये हम ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं, वेयर वी जस्ट चेक वन एंड देन वी ऐड इट. वरना तो आइडियल सिनेरियो में लेट्स से ये फंक्शन आपके पास हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंस देता. लेट्स से आपका एफ ए भी निकालना पड़ना था आपको, एफ बी भी निकालना था, एफ सी भी निकालना था, तो एफ ए बी होना था, एफ ए सी भी निकालना, जिसमें पहले सारों का निकाल के उसमें से एक बेस्ट ले लेते. सो दैट वुड बी सर्चिंग द एंटायर स्पेस. व्हाट वी आर डूइंग इज के हमने सिर्फ सिंगल का लेना है और उसमें से ग्रीडीली चूज कर लेना है. एफ ए, एफ बी और एफ सी में देखा कौन सा बेस्ट है, सो सी चूज कर लिया हमने. उसके बाद फिर हमने जो रिमेनिंग में फिर एफ ए बी सी में से ए और बी रह गए, तो वो चेक किया, तो लेट्स से उसमें हमको पता चला कि बी ले लिया हमने, एंड दैट्स इट. So we don't do the complete search. We just do a linear search now. सर लेकिन इसमें एक इशू होगा कि हमारे पास जो कोरिलेटेड होंगे एट्रीब्यूट्स वो भी आ जाएंगे. Correlation तो हम such explicitly check नहीं कर रहे यहाँ. Of course, it would depend on the measure that you use, f that you are using to. But आ सकते हैं, बिल्कुल सही है, correlated attributes आएंगे. सर यहाँ पे एक और चीज़ कि आप जो रिडंडेंट फीचर्स होते हैं लाइक अगर आपस में डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट ना हो तो फीचर सिलेक्शन से पहले वो रिमूव कर देते हैं और फिर फीचर सिलेक्शन करते हैं. जनरली जो रिडंडेंसी का जो हमने पिछला चेक लगाया था, दैट इज डन बिफोर वी डू फीचर सिलेक्शन जनरली. ठीक है ना वो. एंड एज यू रिमेंबर, जो कोरिलेशन एनालिसिस या जो जिसकी बेसिस पे हम रिडंडेंसी डिटेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट है, विच इज फॉर श्योर डन बिफोर डेटा प्री प्रोसेसिंग. ठीक है ना, तो ये चीजें हमारे पास पहले ही नोन है, और हमने कोई चीज निकालनी है तो यूजली हमने पहले निकाल ली होती है बिफोर वी गो इनटू फीचर सिलेक्शन. ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन है ऑफ कोर्स एफ क्या हो सकता है. तो यूजली दिस इज टास्क डिपेंडेंट. ठीक है ना, तो टास्क डिपेंडेंट मेजर एफ. सो फॉर एग्जांपल, if your eventual task is some kind of classification, तो आप फिर वही classification problem solve करेंगे using all the attributes, and then you will solve it with 1, 2 and 3 attributes. For example, you solve it using one attribute A,
then solubility B, then solubility C. जिसके साथ सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आती है वो पहला फीचर सेलेक्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद आप फिर देखेंगे कि आपने बी से नेक्स्ट बेहतर आ रही है तो वो भी ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट. So in other words, you are trying to build a classifier using just one feature, and based on that information, you decide which feature to select. Okay. So F, as I said, is task dependent. फीचर सिलेक्शन में कुछ कॉमन चीज़ें भी आप कर सकते हैं. ये तो मैंने एक ह्यूरिस्टिक बताया बेस्ड ऑन सम मेजर. कुछ सिंपल एक आइडियाज भी हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक एट्रीब्यूट है जिसमें टन्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं. लेट्स से इसमें greater than 50% values are missing. So you can obviously drop this attribute. So this is also part of selection, you can say. Although ये हम पहले जो हमने steps पढ़े थे वहाँ भी आप drop कर सकते हैं. But again जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें holistically आपने देखनी है. This is not like a linear process. ठीक है. So if there are attributes that have lots of missing values, you can drop them. So another is, let's say you have an attribute with low variance. So low variance का मतलब क्या है? So let's say मैं सर डेटा जी बताएं. डेटा कंसिस्टेंट है. हाँ बेसिकली सर exactly. उस एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, उस एट्रीब्यूट जो वो एट्रीब्यूट है उसकी बाकी से ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है. सो उस इंफॉर्मेशन को अगर हम निकाल भी थे तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली मतलब वो एट्रीब्यूट ऐसा है कि उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं. लेट्स से हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 1000 ऑब्जर्वेशन हैं. बट उस 1000 ऑब्जर्वेशन में 900 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एक ही है. ठीक है ना. और बाकी 100 की दूसरी वैल्यू है. मतलब इन अदर वर्ड्स के vast majority of values are the same and the variance is very low. आप उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे यूं करके पीक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. एक ही वैल्यू होगी एंड दैट्स इट. तो दैट एट्रीब्यूट इज मतलब it's not really contributing anything towards to the understanding of the data. You can replace that attribute with just one value. So to maybe give an example, let's say आपके पास कोई so gender का example ले लेते हैं. Although it's kind of trivial. Let's say gender attribute है आपके पास, but in your data set you find out that males are, let's say, 98% and females are only 2%. ठीक है ना. So obviously you don't need to retain this attribute because you are not, this attribute not providing any additional information. You already know okay 98% of the gender is male, unless your task is very specific to that 2% female. Maybe outlier analysis करना है या rare pattern detection करनी है, उसमें आप फिर रखेंगे. But if that is not your goal, then this attribute can be dropped. ठीक है. So do you understand this point? Yes, sir. So अब एक तो मैंने greedy selection की बात की. अब दूसरी मैंने बात की कि low variance की, तीसरी missing values की. ठीक है ना. So all of these are kind of ways of deciding which attribute to select and which not to select. Sir, यहाँ पे like we studied about feature selection and feature elimination. Where do the like feature engineering come? ये सारी feature engineering ही है. अच्छा, alright. मतलब in general this is feature engineering. But आप dimensionality ये मैंने दो बताया था ना. feature selection बताया था, feature extraction बताया था. ठीक है ना. feature selection में जो existing attributes हैं उनमें से ही आपने select करने हैं. feature extraction में usually you build new features, तो उनमें से फिर select करने हैं. ठीक है ना. तो I would say both of them is feature engineering, although थोड़ा सा आप कह लें कि feature engineering makes more kind of the term
is kind of more applicable to feature extraction because थोड़ी सी आप deeper analysis कर रहे हैं. Here, of course, you have more simpler approaches. ठीक है? ऑलराइट सर, जी. और एक वो चीज़ कि जब आप मॉडल डिफाइन कर रहे होते हैं तो उससे पहले जिस तरह अभी हमने ग्रीडी फीचर सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन की है, लाइक रिडंडेंट फीचर्स भी निकाल रहे हैं, तो देयर आल्सो एग्जिस्ट सम लाइक रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, वो भी इसी काम के लिए होती हैं, लाइक डिफाइन करने के लिए. रेगुलराइजेशन टेक्निक मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दें, आप क्या मतलब ले रहे हैं रेगुलराइजेशन की? सर उसमें वो जिस तरह L2 नॉर्म वगैरह जिसमें वो फीचर्स खुद ही अच्छा एक्सट्रैक्ट अच्छा कर अच्छा, लेता है. मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं. अच्छा अच्छा, हाँ. तो that is also feature selection, but that is that's an automatic way. जैसे मैंने कहा ना कि जो आपका ultimate goal है, based on that you select the features. So in a regularization approach, and this is of course studied in detail in machine learning, you basically have penalties imposed on larger weightage assigned to features. ठीक है? तो ऑटोमेटिकली वो पेनल्टी एडजस्ट होती है बेस्ड ऑन योर टास्क. और किसी की पेनल्टी लेट्स से वेट 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो फीचर प्ले रोल कर ही नहीं रहा हमारे अल्टीमेट टास्क में. इट मीन दैट दैट एट्रीब्यूट इज redundant or not relevant for our particular task. So yes, that is also feature selection, but that is done automatically through the regularizer. ठीक है? तो यूजली वो वाला प्री प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता, दैट इज पार्ट ऑफ द मॉडलिंग. मॉडलिंग के अंदर ही हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि ठीक है. ओके, सो चलिए, आपने रेगुलराइजर की वजह से बात बता दी, तो लेट मी जस्ट मेंशन दिस. अब ये जो मैंने बताया था कि ये आपका जो एनएलपी का जो भी सॉरी एनएलपी मैं क्यों कह रहा हूँ, डेटा माइनिंग में, आई एम टीचिंग बहुत कोर्सेज, ऑफन टाइम्स ये मिक्स हो जाते हैं. सो डेटा माइनिंग का जो भी आपका इवेंचुअल टास्क है, उसके बेसिस पे आपने वो जो मेजर एफ सेलेक्ट करना है. तो यूजली if you use, let's say, the eventual task to decide which attribute to select and then build a loop around that, usually that is called a wrapper approach. मतलब wrapper approach क्या है? मतलब ये है कि let's say मैं classification task है, ठीक है? तो आपने अपना classification algorithm run करना with A attribute, with B attribute, with C attribute, with AB attribute, with AC attribute, and maybe in this case just BC. ठीक है ना? ऑफ कोर्स इसमें सारी आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं और देखें कि किससे बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं. जिससे बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं वही आपने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है ना? सो दिस रैपर अप्रोच, यू आइट्रेट ओवर ऑल द पॉसिबिलिटीज. और उसको आप ग्रीडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, आप क्लासीफायर ए के लिए बनाए सिर्फ, बी के लिए बनाए सिर्फ, और सी के लिए बनाए सिर्फ, और देखें कि कौन सा बेस्ट है. वो पहले चूज कर लें, उसके बाद बस ग्रीडीली नेक्स्ट चूज कर लें, रेदर देन ये पूरा आप पावर सेट इनुमरेट करें. ठीक है? सो दीज अप्रोचेज आर आल्सो कॉल्ड रैपर अप्रोचेज. जो बात हुई थी रेगुलराइजेशन की, तो उसमें बेसिकली जो भी आपका टास्क है, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन टास्क है, उसके अंदर ही आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ही आपने एक पेनल्टी डाली होती है फॉर फीचर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द गुड रिजल्ट्स, और ऑटोमेटिकली उसको वो एलिमिनेट कर देता है. ठीक है ना? बट वी डोंट डू इट बिफोर वी रन द एल्गोरिथम, it is done as part of the algorithm. So these are you can say regularizer for the models, while the previous ones are wrappers, you run them multiple times. ठीक है? So this was feature selection. So feature extraction, आज
स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स और इसमें एक्चुअली ऑप्शन भी बेशुमार हैं. सो फीचर एक्सट्रैक्शन जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर नॉट only talking about A, B, and C. We are saying that we generate new features with some criteria, of course, and then from those generated features, we select the best. So let's say ये मेरे पास ABC original features से और मैंने कोई नए generate कर लिए A prime, B prime और C prime. अब ये मैंने किसी तरीके से जनरेट किए. अब उस तरीके से जो भी मेरा तरीका था वो मुझे ये भी आप बताएगा कौन से बेहतरीन थे, कौन से उससे कम बेहतरीन है, कौन से उससे बेहतरीन. बेस्ड ऑन दैट आई सेलेक्ट द बेस्ट. So maybe based on the ranking that I have, so maybe C prime is the best, B prime is next, or A prime is next. So based on this, then I can, if I wanted just one attribute, I would choose C prime. If I wanted two, I will take C prime and B prime, and of course 3 में सारे आ जाएंगे. So we first generate new features and then select from there. ठीक है. So feature extraction की अप्रोचेज इस तरह की हैं. फीचर सिलेक्शन में उसी में से सिलेक्ट करना है, फीचर एक्सट्रैक्शन में ये है. ठीक है. ओके, सो इसमें अब क्या टेक्निक्स आ रही हैं. हेयर वी हैव ए फेयरली लॉन्ग लिस्ट. तो so we have a fairly long list. So I'll just give you a few ideas here. So the most popular, and maybe most of you have heard about it, is of course principal. Analysis, which is of course PCA. और इसी का एक स्लाइड वेरिएशन है फॉर नॉन स्क्वायर डेटा मैट्रिसेस, एंड मोस्ट डेटा मैट्रिसेस आर नॉन स्क्वायर. ऑफ कोर्स उसका आपको वेरिएंस निकाल के पीसीए भी कर सकते हैं. इज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. ठीक है, विच इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. ठीक है. So these are techniques based on solving the eigenvalue problem, eigenvalue eigensystem problem. And the idea is that we find dimensions in our feature space or data space, tuple space, that have the maximum variance. So remember हमने पहले कहा था कि जो attributes low variance वाले होते हैं, they contain very little information, we can drop them. ठीक है ना. So this feature generation process generates features that are of high variance, and of course orders them in descending order. So the first इसका feature होगा, it has the highest variance, next feature होगा the next highest variance, and so on. So once you have those, then you can make your selection based on how many features that you want to keep. Keep the first top K features if you want. ठीक है. So these are all based on variance. So they typically solve a variance maximization problem. ठीक है. So I don't know if I should go into details. So let me first mention all of them, and then maybe we will see कि हम और क्या कर सकते हैं इस पे. ठीक है. Okay, so this is one approach. The other approach is all of them, by the way, are related to some extent. So factor analysis है एक approach, and this is also based on weighing each attribute and generating new features or new attributes from them. ठीक है. फिर एक independent component analysis, although this is not very commonly used nowadays. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट वो मैक्सिमम वेरिएंस निकालता है, इंडिपेंडेंट्स के देखता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स हाईली इंडिपेंडेंट है, वो पहले सेलेक्ट करवाते हैं. ठीक है. कंपोनेंट एनालिसिस. ठीक है. इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस. रिमेंबर इफ टू एट्रीब्यूट्स आर कोरिलेटेड, हमने पहले भी कहा था, दे वुड प्रोबेबली बी रिडंडेंट. तो इस अप्रोच का ये है कि वी जनरेट फीचर्स, न्यू फीचर्स सच दैट दे आर हाईली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है. So this is independent component analysis. And then we have
an approach which is called non-negative or non-negative matrix factorization. Non-negative matrix factorization. So here again the data matrix जो आपका D है उसको ये factorize करता है and in a particular way into two matrices and उसके basis पे you can select some features. जो नई डायमेंशन स्पेस आती है उसके बेसिस पे आप फीचर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. और फाइनली जो मोर रिसेंट जो है अगेन अब ये सारी चीजें आई एम गिविंग यू द नेम्स डिटेल थोड़ी सी कम है इधर आई एम अफ्रेड बट यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ कोर्स. तो फाइनली इज ऑटो एनकोडर्स. So autoencoders are becoming very popular nowadays in data science. PCA, CCA पीछे रह गए हैं, ज़्यादा लोग अब ऑटो एनकोडर्स ही यूज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स. स्पेलिंग मिस्टेक्स बड़ी हो रही हैं. ठीक है. सो ऑटो एनकोडर्स इन जनरल क्या होते हैं? So basically let's say you have 100 features. ठीक है. So you build a neural network that has 100 inputs and then you reduce those inputs to some desired number of features, let's say 20 जितना आप चाहते हैं, और फिर उससे रिडक्शन से फिर वापस आप 100 पे ले जाएं so that you can supervise the training of the network. So जो इनपुट है वही आपका न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट होगा और बीच वाली लेयर जो होगी वो छोटी होगी. जो बीच वाली लेयर्स के जो आउटपुट है those then become the features. ठीक है. So what do we have? So you have 100 inputs, then you have some layers of, you can have multiple layers, but एक बीच की कोई layer होगी, let's say k which is of course less than 100. You can say nodes कर लें, neural network terminology, and then you build them up to 100 as output. So you train this neural network. Once it is trained on your data, आप जब भी 100 का इनपुट देंगे वो जो के बीच में इन आउट जो उसके आउटपुट्स आ रहे हैं हिडन लेयर के, वो आप उसके फीचर्स ले सकते हैं. ठीक है. अब इसी के हवाले से आई थिंक आई वांट टू मेंशन अदर थिंग, एंड ऑफ कोर्स दीज आर मोर मॉडर्न थिंग्स. आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये, बट इन प्रैक्टिस दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज नाउअडेज. So हमने जितने भी फीचर डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल इवन लेट्स से यू हैव ए डिस्क्रीट एट्रीब्यूट, let's say give an example of grade. और ग्रेड हमारे पास लेट्स से लम्स के जो ग्रेड्स हैं वो क्या होता है? ए स्टार होता है, ए होता है, ए माइनस होता है. ठीक है. बी प्लस, बी, बी माइनस, सी प्लस, सी, सी माइनस, और फिर डी और एफ. ये टोटल कितने बन गए? कैन समवन क्विकली टेल मी? काउंटिंग ए 3 और फिर आपके पास आ 11 गए. हाँ कितने? सर 11. 11 ठीक है. ठीक है ना. तो 11 है. हमने जो पहले कोडिंग की बात की थी, इन 11 को हम इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जो लेटर्स मैंने बनाए हुए करेक्टर से, या हम उनको नंबर्स दे सकते हैं 1 to 11. बट बिकॉज ऑफ greater computational power, larger amounts of data, as well as due to the autoencoder concept, हम इसको वन हॉट एनकोडिंग कर लेते हैं. ठीक है. So you define each value of grade by a vector of size 11. ठीक है. With just 1 1 and rest zeros. ठीक है.
सो लेट्स से किसी का ग्रेड आया है, लेट्स से ए आया है, एंड ऑर्डरिंग मैंने वही वेक्टर की रखी हुई है, तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो 0 बनेगा, 1, एंड देन बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, सो विल रिपीट so we basically now have represented this attribute as a vector of length 11 with just one value in it. So why do we use one hot encoding? Because we can then use this entire vector and feed it into the neural network. Neural network always requires numeric values for training. ठीक है, ऑटो एनकोडर में न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए आपको, वो ए बी सी नहीं आप घुसा सकते उसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ऑल्सो पुट दैम एज रैंक्स। फॉर एग्जांपल ये जो एट्रीब्यूट था, ये ग्रेड जो था ऑर्डिनल एट्रीब्यूट है, इसको रैंक्स करके 1 2 3 भी कर सकते थे। बट व्हाट अबाउट फॉर एग्जांपल एन नॉमिनल एट्रीब्यूट, लेट्स से कलर का एट्रीब्यूट है RGB, या मल्टीपल कलर्स हैं, 10 कलर्स हैं, या फॉर एग्जांपल इवन टेक्स्ट एनालिटिक्स में जो फीचर्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। सो वर्ड्स कैन इजीली गो इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, उसमें भी हम वन हॉट इनकोडिंग कर देते हैं। एक वर्ड आ रहा है तो सिर्फ एक 1 होगा, बाकी सारे 9999 जीरोस हैं, and then feed it into the neural network. Of course, total number of features या values becomes very large, but because your neural network can process numbers and assuming you have lots of data, आप बड़ा आसानी से इसको train कर सकते हैं, learn a dense set of features, K features in the middle of the neural network. ठीक है? So this is now quite commonly used in practice. ठीक है? So using one hot encoding, you can now feed all attributes into numbers, convert all attributes into numbers. ठीक है, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं वो तो वैसे ही जाएंगे, डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स हैं नॉमिनल या ऑर्डिनल, वो वन हॉट इनकोडिंग में हो जाएंगे। ठीक है, okay, I think we are running out of time. We have 5 minutes. So your quiz is going to start at 6:05 and you have about 15 minutes, 10 to 15 minutes. Quiz duration actually 10 minutes है। ठीक है, once you start the quiz, you will end in 10 minutes. And the questions are 5. You have to do it in a linear fashion. ठीक है, okay, we still have a couple of minutes. So next जो topic है actually वो numerosity reduction है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था, we want to reduce the number of rows, number of observations, number of tuples in our data set. Dimensionality reduction में number of columns reduce हो रहे, number of features reduce हो रहे, number of attributes reduce हो रहे थे। ठीक है, और उसमें फर्दर डायमेंशनल रिडक्शन में हमने दो कैटेगरी डिस्कस की, फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन में फिर एक ग्रिड तो फीचर selection में you select the existing features, feature extraction में you generate new feature and then select from them. ठीक है, तो numerosity reduction में the most popular approaches are the sampling approaches. ठीक है, so you have, let's say 100 observations, you want to sample from them. ठीक है ना, of course sampling technique simple ही रखते हैं, but उनमें थोड़े से nuances हैं which we will probably, I think, discuss probably next time. I think I will stop here. If you have any questions, and then you can get ready for the quiz. So any questions?
No questions? सर ये क्विज LMS पर ही है? जी LMS पे ही है। सर वो एक्चुअली उसका जो है ना UI अपडेट हुई है ना, क्या अपडेट हुई? UI अपडेट हुई है, ये साइट इन्होंने अपडेट की है। हाँ Sir, a question. जी जी Not much different from the previous one. So here is almost same. जी अब जी Sir, वो leave कर सकते हैं class अब? मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द क्विज यू नीड टू बी ऑन जूम। नेमतुल्ला क्या Okay. प्रोसेस है आपने बता दिया? Yeah, they should be on the Zoom thing. I think those who are not here, then you can ask them for the next time. But everyone should be here given the Zoom. Okay. आइडियली That's fine. यू शुड बी ऑन जूम। अभी फिर आपको पता नहीं था तो वो एक अलग बात है। मेरा जो इरादा है डाउन द रोड के वी विल आल्सो टेक अ स्नैप ऑफ दोज हु आर ऑन जूम एंड चेक विद द सबमिशंस ऑन LMS। ठीक है, ऑफ कोर्स अदर देन कोई मेजर किसी का इशू है तो ऑब्वियसली वो बता सकता है, बट यू हैव टू बी ऑन जूम व्हाइल यू आर डूइंग द क्विज। ठीक है, so let me stop the screen share.